The sum of the age of father and son is 72 years. 6 years ago, the father age was 2 times the age of son. What was the son age 6 years ago? Let A and B be the age of father and son respectively. Then A plus B is equal to 72. ये क्वेश्चन वन हमारे पास हो जाएगी. 6 years ago. 6 years ago. 6 साल पहले father age हमारे पास आ जाएगी A minus 6. Son age यानी B minus 6 हो जाएगी. ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी. ये क्वेश्चन 3 हो जाएगी. बाय गिवन कंडीशन हमारे पास बाय गिवन कंडीशन A minus 6 यानी father age is equal to father age was 2 times the age of son हो जाएगी. यानी is equal to 2 मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा B minus 6. ये हमारे पास आ जाएगा 2B minus 12 and A minus 6 is equal to 2B minus 12 और ये हमारे पास आ जाएगा ये 2B इधर आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा इज इक्वल टू 12 minus 12 plus 6 is equal to minus 6. A minus 2B is equal to minus 6. इक्वेशन 4 हो जाएगी हमारे पास. Subtract question 1 from question 4 यानी 4 में से 1 को माइनस कर देना. 4 हमारे पास आ जाएगी A minus 2B is equal to minus 6A क्वेश्चन. इसके बाद क्वेश्चन 1 हमारे पास ये है. ये हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B इक्वल टू 72. ये साइन चेंज होगा प्लस माइनस माइनस. ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 3B इज इक्वल टू 72
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 78, यहाँ पे नेगेटिव, बी हमारे पास आ जाएगा -78 -3 इज इक्वल टू 26। अब ये क्वेश्चन हमने किस में पुट करनी है, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे। 5 पुट क्वेश्चन 5 इन 3, यहाँ पे हमारे पास है जी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 -6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20। सन एज 20 है, सो 6 year age son age was 20 year। ये हमारा आंसर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।